हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हाल है आप लोगों का? व्हाट अ प्लेजर टू सी यू ऑल दिस मॉर्निंग। आज की डेट है 16 मार्च 2023। दैट इज 16 मार्च 2023। डेट बतानी जरूरी है शुरू में, सो दैट दोज ऑफ यू मिस, अगर 5-6 दिन आपने मिस कर दिया मॉर्निंग सेशन एंड एग्जाम थे, कुछ था, देन यू वांट टू कैच अप कि सर ने 4-5 दिन क्या बातें की है न्यूज में। So it's important that in the beginning you have this date. वैसे थंबनेल में भी डेट है, बट इवन देन, इनफैक्ट जो मिस कर रहे हैं उनके लिए मेरी एडवाइस है कि इसको 1.5 स्पीड पे आप जो है बाद में देखें। पिक अप अ डायरी एंड अ पेन, पिक अप अ डायरी एंड पेन। आई कम आउट विथ सम वेरी वेरी बिग इश्यूज, इवन इफ यू जस्ट नोट डाउन द पॉइंट्स दैट आई एम कवरिंग एंड रिमेंबर दैट, या डायरी में लिख लिया, उस टाइम देख लिया, it may be sufficient to talk in a group discussion or to answer a question on current affairs. There is nothing that is moving in the world or in India which we are not covering. Nothing. I'm not going to leave anything important. However, we will avoid the 3 C's: cricket, crime, cinema and politics. Politics में इधर उधर की बातें चलती रहती हैं, we will not cover. But any matter, if it is constitutional in nature, we will cover it. Any matter which is related to social diversity of India, we will cover it. Any big news of sports, we do cover it. And of course, when it comes to cinema, if there's Natu Natu, we'll cover it. If there is a documentary which wins an Oscar, we'll cover it. ठीक है, तो ये सब कवर करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उनको तो बहुत एवरीडे आई कवर, सो यू विल गेट अ गुड फील. So generally I'm just covering straight from the newspaper and the editorials. बहुत clarity आती जा रही है मेरे mind में भी, आपके mind में भी. So there are 3-4 issues which are in front of the country and the world. आज फिर से वही issues चल रहे हैं, we will cover it. So good to see you all. जय हिंद, good morning. I can see दिग्विजय, एक ने तो अपना ID जय हिंद, very good. दीक्षा, विराट, अमन, विवेक, सानू, रणवीर, सुमेध, दीप प्रधान, पीसी होम डिजाइन, वेरी गुड. ब्रह्मा, अर्पित, रोहित, गुड मॉर्निंग. ऊपर भी हैं कुछ, आदर्श, जे राजपाल, नितिन पांडे, वी ब्लॉग, ओके गुड. सो यू ऑल आर हियर. नाम सुन के अच्छा लगता है, रोहित, रोहन वर्मा, रणवीर यादव, है ना, अच्छा लगता है ना. सो प्लीज अनिल कुमार रेड्डी, राज बुरांडे, तनु सिंह, they're just joining, very nice. प्रतीक, सूर्या सिंह, अपने नाम से पहचानो. रुबीन प्रुस्ती, who came home the other day, कैडेट रॉकी, अर्पिता सिंह, वेरी गुड. गौरंग मल्होत्रा, हिमांशु सूर्या, संतोष पाटिल, अमेजिंग अमेजिंग. पूरा इंडिया का कैनवस मेरे सामने. मैथमेटिक्स पढ़ ले. मुझे मत बताओ, मेरा मैथ्स बहुत कमजोर था, मैथमेटिक्स पढ़ ले, मैंने उसके बिना गुजारा कर लिया जिंदगी. तनुजा राठौर. या before we start, yesterday we had a amazing session, inaugural session of BOCC 14. I'm so overwhelmed with the response the students have given, and my teaching faculty. We were all there yesterday. Abhi 1-2 दिन we'll make the groups and we will start, we'll roll this out. Before that, I will have AMA with you all to know you better. ठीक है, before you go into the groups, probably I'll have 1 or 2 classes with you, just you and me, and we will just get along, know each other, and मैं देखूंगा आप किस लेवल पे हैं, कैसे हैं, और आपसे बात करेंगे. तो कल बहुत अच्छा रहा. हाँ, कल ऑजी का बर्थडे था, उसके बाद हमने ऑजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया कल. एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ केक फ्रॉम द बेकरी, आवर डॉटर इन लॉ मेड अ केक एट होम which had eggs. He loves bread, so it had bread. He loves bananas, so it had bananas. It had some chicken, it had some dog biscuits, and some curd on top. तो ये उसके केक का ये उसका केक था, और वो मिनटों में खा गया पूरा केक. बहुत अच्छा लगा. He's 6 year old. ठीक है, चलो. तो ऑजी का कोई मीनिंग नहीं, ऑजी नाम है उसका. इट्स अ कैरेक्टर इन वन ऑफ द कार्टून्स. दिस इज अ नेम माय सन गेव. तो हमें भी कोई आइडिया नहीं था. ऑजी, आई बिलीव कोई कार्टून कैरेक्टर है जो उसको पसंद था, हमें नहीं पता. ठीक है, चलो. तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. लेट्स स्टार्ट विद द इंडियन एक्सप्रेस, द करेज, द जर्नलिज्म ऑफ करेज. 2 चीजें समझ नहीं आया कहां से शुरू करूं, बट दिस इज हार्ड हिटिंग.
threats dissent can't be ground for governor to call floor test Supreme Court. ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है. इट्स अ 5 judge constitutional bench which is hearing the plea of the dismissed Maharashtra chief minister, जिसकी पार्टी भी चली गई, सिंबल भी चला गया, गवर्नमेंट भी चली गई. And it happened after he had been in power for 3 years and by rebel MLAs. And here the role of governor, हम रोज कवर कर रहे हैं रोल ऑफ गवर्नर. सब तेलंगाना गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है, पंजाब गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई हुई थी. वी सॉ व्हाट हैपेंड इन मध्य प्रदेश, वी सॉ इन कर्नाटका, वी सॉ इन गोवा, we saw it in Maharashtra in front of us. So Supreme Court has very, very severe criticism, very, very severe criticism. And this is not the way democracy should behave. This is not the way a governor should behave. He says if there is inner party feud, why should you have a floor test? Why should you have a floor test? उनको पार्टी को sort out करने दो. They could have thrown him and chosen somebody as a leader and continued the government. But why did you call a floor test? And that too all of a sudden. And then why were these MLAs? वो तो अभी आया ही नहीं है मुद्दा. They were taken at midnight in a chartered aircraft to Gujarat, those then to Assam, kept in a 5-star resort there for till the time this issue was sorted out. Imagine. So this is thanks to Supreme Court that we will hear some good judgments. I'm looking forward to this. And he says governor should have desisted from any move that can trigger a fall of government. So he says governor का काम नहीं है सरकार को गिराना. He should not make it happen. So that is what is let us see. The arguments opposite this is looking to be very weak. Let's wait and watch. Then another important news today is a policy decision by BCI, Bar Council of India. ये बहुत important decision है, far reaching है. ये वैसा decision है जैसे foreign universities को allow किया गया, foreign newspapers को allow किया गया, foreign publications to be printed and published in India. So this is foreign lawyers, law firms can practice in select fields, says BCI. BCI is not cricket, is Bar Council of India. तो इन्होंने किया है कि foreign firms can open office in India, they can practice, they cannot appear in court. उसके लिए Indian lawyer hire कर लो, Indian lawyer खड़ा हो जाएगा आपके लिए. But you can open office in select areas, especially corporate laws and other things, you can operate from India. So now we will see some big law firms जिनके बारे में हम बुक्स में पढ़ते रहे हैं, यूएस में और उधर यूरोप में होते हैं. So this is a important, ये नोट कर लेना ये इशू कि ये पॉलिसी डिसीजन है गवर्नमेंट का, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का. ठीक है. सो अब जाते हैं सीधा हम एडिटोरियल पर. बीच में एक दो न्यूज और हैं, देखता हूं मैं अगर आई कवर some good stories and some not so good stories. मेरा काम आपको एक आधी गुड न्यूज देना and फिर एक आधी थोड़ी सी ऐसी न्यूज भी देना which is disturbing. So the good news is here. I just love this couple. Bommai and Bailey from Tamil Nadu, who featured in this film, in this documentary Elephant Whisperers. इसको Netflix पे स्ट्रीम हो रही है, देख लो. नहीं है तो YouTube पे भी इसके ट्रेलर वगैरह कुछ ना कुछ मिल जाएगा. So they were called by the Chief Minister of Tamil Nadu yesterday and given some cash prize and honored. And the way they have acted in this, acted it is based on their life. It's not acting, it's the real thing. Is makes them so lovable, Now we come to, so इनका नाम याद रखना, Tamanna and Bailey. How they bring up two baby elephants who were left behind by their groups, by their mothers. Stampede में या कहीं बच्चे पीछे छूट जाते हैं और वो mothers कहीं चलेगी. So इन दोनों को Raghu was the name of the boy. और उसके ऊपर है basically. And the punchline in the end is when Bailey says, though I don't understand Tamil much, Bailey says Raghu can manage, he's a boy, but there was a female calf also. उसकी मुझे चिंता हो रही है. She's very, very pampered, something like that she says. Okay. Now we come to after that heartwarming story, we come to the Indian Express editorial. Beijing plays peacemaker. This is by Shyam Saran. When Shyam Saran writes, please take note, because he was Foreign Secretary of India. फॉरेन सेक्रेटरी रहे इंडिया के, राजदूत रहे कई देशों में. तो जब ये लिखते हैं तो आपको जो है नोटिस करना चाहिए. ही सेज इंडिया शुड वेलकम सऊदी ईरान डील एंड यूज इट टू एनहांस इट्स रिलेशंस विद ईरान. तो मैंने इसमें बताया था कि इंडिया गॉट बोल्ड. इट वाज अ सरप्राइज व्हेन चाइना
China did this diplomatic coup of bringing two Muslim nations, powerful Muslim nations in Middle East together, and after 7 years they're starting their embassy. Now Saudi Arabia is going to invest in Iran. Saudi Arabia is going to invest in Iran, and deal brokered by China in China secretly, and we were caught by surprise. He says, no, don't worry, ho gaya so ho gaya, but we must now welcome it. We must make a statement. We welcome this, and we should at the same time use this now to enhance our relations with Iran are very good. मैंने बोला था 15 अगस्त 1947 तक ईरान हमारा बॉर्डर मिलता था. प्लस ईरान इज पर्शिया, पुराना पर्शिया, great historical civilization, very very good people, very people who believe in their culture and ethos. काफी इंडियन से मेल खाती, लैंग्वेज भी बहुत मिलती है उनके. सो दिस इज ऑन दैट. देन दिस इज ऑन द स्टोलन ट्रेजर. 2 दिन से मैंने कवर किया था ये इंटरनेशनल investigation with Indian Express has been doing this stealing of artifacts, especially Indians, to various museums and all. उसके ऊपर है. Now this is the village by the border. This is written by Anil Baluni. He's from Uttarakhand. His village falls very close to the border. I have traveled across the border in India, not only in Punjab, Rajasthan, but all over J&K. मतलब all over means right from where J&K boundary starts. वहां से लेके मैं पूरा नॉर्थ कश्मीर तक तकरीबन बॉर्डर पे मैंने पैदल घुमा हुआ, पूरा पुंछ, राजौरी, सूरनकोट, ऑल दिस. देन अक्रॉस पीर पंजाब, देन द्रास, कारगिल, बटालिक, मशको, and then into Turtuk, and then Siachen, then come down to eastern Ladakh, Pengongso Lake, और ये सब मैं गया हूँ. तो बॉर्डर विलेजेस का की बहुत इंपॉर्टेंस है, वो ये बताती है, क्योंकि people who live on border villages are eyes and ears of our military, eyes and ears, but there are no jobs there. तो सब खाली होके इधर आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं जॉब्स के लिए, especially the male population. So उसके ऊपर है that we need vibrant village programs so that they stay there and they can find livelihood there, cattle, agriculture, jobs, जो भी करना है. So उसके ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप यूज कर सकते हो उसको कभी ना कभी करंट अफेयर्स में, कहीं डिस्कशन में. नाउ दिस इज यूनियन ऑफ आवर ओन चॉइस. ये इशू हर रोज आ रहा है. All 3 newspapers have written editorial on this, all on the same line, and now this is written by Indra Jaising. Indra Jaising is a very, very senior Supreme Court advocate, very senior. Many times she comes on TV. Very, very stable, a person with great intellect and this. So she's written. What she says? She says, Centre's affidavit given by the central government on same-sex marriage tries to deny hard-won gains from the fight against Section 377. So it took 18 years for 377 to go from our statute books. A draconian law created by the British morality. It is British morality on us. So same thing is what she says. She says what the petitions for same-sex marriage are demanding is not the right to marry. ये गलती मत करना. ये लॉजिक आप यूज कर सकते हो अगर डिबेट में या कहीं है. They are not asking permission to marry. वो कर ली उन्होंने शादी, वो नहीं आपकी परवाह कर रहे. Since they have the freedom already, but the legal recognition by the law of the decision that they have taken to the same extent that a heterosexual couple gets the recognition. इनको सिर्फ recognition चाहिए. Recognition किस लिए चाहिए? Adoption के लिए चाहिए. Recognition चाहिए property inheritance के लिए चाहिए. Recognition चाहिए अपना joint accounts खोलने के लिए. Recognition चाहिए if one of the spouse dies, pension. These are exactly what happens with heterosexual couples. That is what they're asking, nothing more. So she says, can the state withhold this recognition even when no legitimate state interest is shown to exist? State का क्या interest? She argues, what is the interest of the state? If whether they are heterosexual or they are, from the LGBT community, what is the state का कोई interest नहीं. It doesn't disturb the state at all. So that is what she's arguing in an article written here. ये मैं आपको editorial भी मैं बता चुका हूँ. And we may have a debate on this topic in the next YMA debate. तो जो बच्चे वो हैं अपनी अभी से research वगैरह कर लो, so that you come out with you come out on fire. Now this is the explained. This is the explained banks that are too big to fail. ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ बात.
as far as India is concerned, this article just reinforces what I've been telling in class. This is exactly जो मैं आपको बार बार जो मेरी क्लास अटेंड करते हैं उनको बोलता रहा हूं. The banks are SBI, ICICI, HDFC. ये तीन बैंक are too big to fail. Like Silicon Valley Bank fail हो गया, Signature Bank fail हो गया, एक और बैंक fail हो गया. 3 banks in US have failed, one after the other. So this is an article. If something happens to ICICI, HDFC, these are private sector banks, but very, very big. SBI is of course the biggest bank in India. शायद सारे बैंक मिला के SBI के आसपास होंगे, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, या HDFC और ICICI मिला के शायद SBI के आसपास होंगे. So this is on that Indian government must take, and I'm sure must be taking all precautions possible. These banks should not fail. कुछ होगा तो government will. Then we have, this is explained on that law. जो लॉ आया है आज, स्पेशली जो जैक ब्रांच के, इनसे पूछा जा सकता है, जैक ब्रांच के कैंडिडेट से, कि भाई ये पॉलिसी आ गई है कि फॉरेन फर्म्स कैन कम एंड प्रैक्टिस इन इंडिया, कैन ओपन देयर ऑफिस, का क्या मतलब है. सो कैन प्रैक्टिस बट नॉट अपीयर इन कोर्ट, व्हाट चेंजेस फॉर फॉरेन लॉ फर्म्स. सो दिस इज एक्सप्लेन्ड लॉ, एंड this is a small article on environment. Now there are plastic rocks on island of Brazil. हमने इतना प्लास्टिक फेंक दिया समुद्र में, इतना प्लास्टिक. Not only are ocean animals are reptiles and ships and fish and all are affected. Even that plastic has become like rock. So this is what is happening. And tiny plastics have got into a food chain, to animal chain and everywhere else. तो ये सरप्राइज मत होना कि अगली जनरेशन जो है will be sitting on plastic rocks sometime on the beach and taking a picture. So this is what we have done to our environment. Now we come to the world. Here you can see Pakistan crisis has blown away for some time. For some time, the Lahore High Court, LHC they call it, Lahore High Court stepped in when there was a standoff almost 8 hours outside Imran Khan's house in Lahore. मैं खुद live देख रहा था वो picture because I was on live TV discussing this issue. And Lahore High Court has told the police to get away and wait for further orders. So let's wait and watch. When will they go and capture Imran Khan again? Then holding joint naval exercise with Russia, Iran this week, says China. तो चाइना का जो फॉर्मूला है, चाइना का जो यूक्रेन के लिए भी फॉर्मूला अपेयर हो रहा, शी जिनपिंग इज गोइंग टू रशिया, then he may have a talk with Zelensky also to appear as a statesman. As a statesman, the way China's role is increasing in the region. So they are going to hold exercise where Russia, Iran. So ये मैं आपको बताया था, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, नया जियोपॉलिटिकल ग्रुप तैयार हो रहा है, जियोपॉलिटिकल पावर सेंटर तैयार हो रहा है. And this is not around Russia, it's around China. And Russia will be a junior partner. यहाँ चाइना है, इसमें रशिया इधर है, फिर ईरान, and then of course you'll have North Korea. So these countries and few more friends of Iran, China may join this. So this is going to be interesting. दूसरी तरफ AUKUS है and Quad है and NATO तो है ही. NATO तो खैर पूरा मिलिट्री अलायंस है, वो तो है ही एंटी रशिया, इसमें कोई डाउट नहीं, and anti China. So please give me thumbs up if you are enjoying this session because first newspaper is over. एक thumbs up दे दो. Please like the session. मैं देख रहा हूँ आप लोग सेशन लाइक नहीं करते हो, निकल जाते हो उसी के बाद, and you are not even sharing it. ठीक है, तो प्लीज शेयर इट. बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको जरूरत है इसकी, ठीक है, and they may not know it. Now today for a change I am picking up the Times of India. हिंदू बाद में लेके आऊंगा. This is on the tension. This is on the tension with Russia on the drone in Black Sea. Russia claims they have drowned American drone. America says we will take care of our equities. Russia is trying to search for that drone कि उसके कहीं मिल जाए उसका टुकड़ा कोई पे यहाँ पे गिरा हुआ, हम उसको उठा लें वहां से. So this is creating tension. Moscow demands an end to military fights near territory. British and German Air Force fighters intercept Russian plane near Estonia. So ये समझो क्यों हो रहा है, उसमें whose interest is there in this? For those who understand geopolitics, some of you do. I may be wrong. देखो
I'm only giving my opinions, and I like this kind of discussion. Ki, Russia wants in some way America or somebody to enter the war. Some way. The moment anyone else from NATO enters the war, an aircraft or a soldiers on ground, the dimensions will change. So probably Russia is egging on कि आओ तुम लड़ाई करने के लिए, फिर मैं दिखाऊंगा. तो let's wait and watch क्या होता है. But tension is there. US has categorically said, and especially US led by Biden will not enter the war. That I can tell you. Doesn't look like. This is Pakistan हो गया है. ये देखो खालिस्तान सपोर्टर्स. इमेजिन ये क्या हो जाता है, इन लोगों का दिमाग खराब हो जाता है जब ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके जाते हैं. ये इंडियंस है, इंडियन पासपोर्ट पे गए, अब शायद उनकी वहां की सिटीजनशिप ले ली होगी. They have closed our consulate in Brisbane, and their attacks on temples in Australia. So this is getting serious. This is getting serious. Why so many Khalistani activists in these three places are so much anti-India? अच्छा देखो, now very interesting news. ये very interesting news है. ये मैं आपको ये भी lighter way में बता दूं, but you will come to know, at least you will get an idea कि what is a Western democracy and compared to South Asian or Indian subcontinent. This is Rishi Sunak. They had gone for a walk. वहाँ जाते हैं walk के लिए husband wife, prime minister, president and all. They can go to a restaurant and have a meal also. So they go for a walk, and their dog, they have a lab like Aussie. Lab का नाम है क्या नाम रखा है इसका इन्होंने? Nova is the name. So Nova का इन्होंने leash खोल दिया Hyde Park. Hyde Park is a place a lot of people move around. I've been to London बहुत साल पहले. वहां पे पुलिस ने क्वेश्चन किया, इनको फाइन लगेगा. तुम प्राइम मिनिस्टर हो, गलती करी, फाइन दे दो. He paid a fine when he was making a video in the car sitting behind without seat belt. उसका भी इन्होंने मेरे ख्याल $500 फाइन पे किया. और एक बार पहले ही attended a party in COVID when he was a minister. Even then he was fined by the police. So this is the third fine, and second fine as prime minister he will get. बढ़िया है, but he's rich enough, he can pay, कोई problem नहीं, fine की कोई issue नहीं. But making a statement, this is making a statement. Now this is governors becoming part of politics, much more hard hitting headline given by Times of India. Governors becoming part of politics to topple elected government, say Supreme Court. इससे ज्यादा मतलब शर्म की बात हो सकती है किसी गवर्नर के लिए कि आपका सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप तो you are becoming part of politics to topple government, and governor is supposed to be apolitical. Governor, president, prime minister, sorry, not prime minister, the vice president, governor, president of India, chief justice of India, election commissioner, ED, CBI, RAW, IB, they are not supposed to be political at all. They are supposed to be totally army chiefs, Navy, Air Force, PSF, CF, are supposed totally apolitical. तो ये गवर्नर के ऊपर है, इन्होंने बोला है उसके ऊपर. And yeah, there's a nice news here. Age no bar. ये हमारे प्रोफेसर है मैंगलोर में. He has got his PhD at 79 years. 79 years में he has earned his PhD. And because of his age, they told him आप बैठ के क्लास ले लो. लास्ट में जो आया हुआ था, he said no, don't make any exception. I'll stand and give my viva. So when I saw him, I finished my PhD at 58 and a half. तो ये तो काफी सीनियर है मेरे से भी. तो ये है इनका. And let me see, there was a news I wanted to cover for you. हाँ, दो न्यूज है. एक तो ये है, why it's hard to trust India's university rankings. Again, any of this, whether it's TRP, some channel claiming I'm the number one channel, फिर पता लगा कि वो सब जाली था, फिर पकड़ा गया तुमने तो फिर वो बंद किया TRP सिस्टम काफी दिनों के, अभी नया दोबारा शुरू किया. So university ranking, this article says it can't be believed because it is heavily you can say मैनिपुलेटेड, हेविली मैनिपुलेटेड कि किस यूनिवर्सिटी को क्या ग्रेडिंग दे. प्राइवेट में बिकॉज ऐड देनी होती है ना, वी आर A+, वी आर सो एंड सो, वी आर सो एंड सो. सो दे से these are mostly manipulated and don't believe, you can't believe in this kind of a university
accreditations given here. Okay, we'll finish here. Now we go to the Indian Express, the Hindu. Here, exports fall 8.8. Trade deficit shrinks to over 7%. So this is an economic issue, and they say that our exports, मैं पहले बताता रहा हूँ ना, exports are falling, but also imports are falling. तो exports fall करेंगे तो क्या है, आप foreign exchange नहीं कमाते हो, क्योंकि जो भी आप एक्सपोर्ट करोगे पैसे लोगे डॉलर में. कपड़े भेजो, मशीनरी भेजो, स्पेयर पार्ट्स, केमिकल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जो भी बेच रहे हो बाहर, so you are earning. So that has fallen, so you can't earn. But if imports are also falling, क्योंकि import हम कुछ करते हैं उसके लिए डॉलर में देना पड़ता है, so we are that way okay. But trade deficit shrinks to 7%. So gold imports surge post budget, but economists say overall lower import bill could signal slack in domestic demand. Commerce Secretary says efforts to lower inessential imports are bearing fruit. तो जो essential नहीं है उसके लिए गवर्नमेंट ने रोक लगाई हुई है कि भी essential नहीं, इसको मत लो. So government can put a stop on anything which they feel is not essential. ठीक है, so good. This is of course governor cannot precipitate the fall of an elected government. This is by the Chief Justice of India hearing this case yesterday. And ये वो elephant whisperers, that couple, some Bowman and Belly, उनके ऊपर है. They were felicitated, sorry, सही word use होना चाहिए, felicitated by the Tamil Nadu Chief Justice. Now we come to the editorial. Here, lessons learned. This is on this collapse of the American banks. 3 banks, 2 of them very big banks, especially Silicon Valley Bank is very big bank. I think the 7th largest or something like that in US. So lessons learned, RBI should ensure banks are protected from global contagion and mismanagement. Mismanagement क्यों? ले लो. Somebody's phone and you give money to somebody and they run away with money. But somehow our banks have been able to withstand that. You know, you are aware of Nirav Choksi's case. Punjab National Bank, one branch in Bombay, was giving overdraft after thousands of crores of rupees was given. And then they investigated. I don't know what happened about that case, whether they're under arrest or not. So there was a branch entirely complicit in doing this. So mismanagement and global contagion. Then this is on AUKUS, sharp divides. The paper says that forming an organization like this should be as a deterrent. Deterrence means दूसरे को डराना है, मारना नहीं है, divide नहीं करना है. So it says AUKUS should serve as a deterrent, not exacerbate conflict. नया word है exacerbate. Exacerbate means increase करना. आपको चोट लगी हुई है, आप फिर फुटबॉल खेलने चले गए और ज्यादा बढ़ गया, तो you exacerbated your injury. ठीक है. Deterrent भी नया word है. Deterrent is to एक तरीके से है दूसरे को सब डराना कि भी डेटरेंट है, देखो मेरे पास ये वेपन है, नहीं तो मार दो. अब इसीलिए न्यूक्लियर वेपन्स डिक्लेयर करते हैं कंट्री, छुपाते नहीं, बोले भी मेरे पास इतने हैं ये मिसाइल. क्यों मिसाइल लॉन्च डिक्लेयर करी जाती है? ना हमने 5000 किलोमीटर की पृथ्वी लॉन्च इंडिया ने कर दी, हम पेपर में छापते हैं, बिकॉज इट इज डेटरेंट. वी आर टेलिंग चाइना, पाकिस्तान भी देख ले हमने कर दी फायर, फिर मत बोलना. सो दीज आर वेपन्स ऑफ डेटरेंस. आया मजा सुन के बातें? हाँ, ये मैं आपके लाना चाहता था. 2 आर्टिकल है, फ्रिक्शन ओवर फॉर्मूला. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे भी नहीं पता था. आई डिडंट नो दिस. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. इज दैट हाउ इज द मनी डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टेट्स? समझ लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कलेक्ट्स 100 रुपीज फ्रॉम एक्साइज, दिस दैट, इनकम टैक्स, जीएसटी, 100 रुपया. हाउ डज इट गिव इट टू द स्टेट्स? वापस जाता है ना स्टेट्स को. हमारे सिस्टम में पूरा मनी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करते फिर देते हैं, ले लो ऐसे करके. हाउ इज इट गिवन? एनी आइडिया? एनीवन हैज? दिस इशू हैज बीन रेज्ड बाय तमिलनाडु. Tamil says we are giving 1 rupee to the center. For every 1 rupee that Tamil Nadu gives to the center, they get back 29 paisa. वो कह रहे यार मैं देंगे नहीं अपना, मैं तुमने मुझे नहीं देना मत दो, मेरे को let me keep whatever tax I collect, because that way they are whatever they can use. So when Tamil Nadu gives 1 rupee, they get back 29 paisa. While UP gives 1 rupee, gets 2 rupees 73 paisa. बल्ले बल्ले. UP की बल्ले बल्ले. Bihar 7 rupees 6 paisa.
कि 1 रुपया दे रहा है या तू 1 रुपया मत दे, मुझे 6 रुपये 6 पैसे वापस कर दे. So this is a very very delicate calculation based on the population. So ये formula है by the 15th Finance Commission, FC Finance Commission FC 15th Finance Commission ने formula निकाला था based on the population. So now the question comes. This can be a debate topic. It can be very very interesting. कि ये जो स्टेट है जिनको बीमारू स्टेट कहते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ये they never control their population. और पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ी जा रही है, ये पैसे खाए जा रहे हैं सेंटर के. जो साउथ ईस्ट स्टेट्स थे, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, इन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल करी, इनको पैसे नहीं मिल रहे. कहते हैं हमें तो तुमने, वी शुड हैव बीन अवॉर्डेड फॉर दिस कंट्रोलिंग पॉपुलेशन. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है. सो ये बहुत बढ़िया, ये हिंदू ही निकाल सकता है ऐसे. ये आपको कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसे आर्टिकल मिलेंगे. आया मजा? गिव अ थम्स अप, गिव अ थम्स अप. आपको दूंगा मैं, इसके बाद आपके क्वेश्चंस भी आंसर करूंगा. ठीक है. हाँ. नाउ कम्स सस्टेनेबल मॉडल फॉर विमेन्स लीडरशिप. दिस इज अ वेरी नाइस आर्टिकल रिटन बाय 4 women. एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि जेंडर इश्यूज पे भी हम बात करते रहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ओनली पॉसिबल इफ गर्ल्स एंड विमेन आर ऑल्सो इक्वली एम्प्लॉयबल इन द वर्कफोर्स. ठीक है. तो ये कहते हैं कि India has the largest number of girls and young women. Boys maximum तो लड़कियां भी है. Even though the sex ratio is slightly awkward many places, but fine, it must be 48-49% to 50% ऐसा होगा. So they say we have the largest population of young girls and young women. So government India has taken wide-ranging initiatives across critical domains of education, health, digital, financing, leadership. Establish feasible frameworks to help achieve sustainable development goal number 5, which envisions world to be more gender equal place by 2030. तो sustainable development goal number 5 का है 2030 तक कि women should be more gender equal. कि हर दफ्तर में जाओ, every second person you meet should be a woman or a third person. In India it's just 14% women in workforce, which is really lopsided. पार्लियामेंट में ही नहीं है. और ये पार्लियामेंट तो फिर भी ठीक है, ये पार्लियामेंट तो फिर भी ठीक है. वी हार्डली हैव एनी. एंड इसी के मद्देनजर आ गया सवाल, जब ये है. अब ये देखो ऑन रिजर्वेशन, व्हेन डिड द बिल कम? ये पंचायती राज में विमेन के लिए रिजर्वेशन लाया गया था, 73rd 74th अमेंडमेंट, 1980s, राजीव गांधी गवर्नमेंट. 73rd and 74th अमेंडमेंट which reserved 1/3 seat in पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. पंचायत में लोअर लेवल पे ले आए, ऊपर नहीं लाए हम. एंड सम ऑफ द पीपल नाउ आई नो, आई विल नॉट नेम देम, आर सीनियर मिनिस्टर्स और मेनी इन द पोजीशन और हैव बीन चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट. दे अपोज, दे टोर द बिल फाड़ दिया उन्होंने, विमेन रिजर्वेशन बिल. किसे नहीं, पार्लियामेंट में लाना, पार्लियामेंट शुड remain a male bastion. So only 14% of members in Indian Parliament are women, and this is the highest. Credit to this present Parliament. नहीं तो, and it is less. Another hard-hitting fact. According to Inter-Parliamentary Union, India has lower percentage of women in lower house than its neighbors. Pakistan, Sri Lanka, Nepal, and Bangladesh. इनमें ज्यादा औरतें पार्लियामेंटेरियन है. Comes to lower house of India, that is Rajya Sabha. है मजा? ये है स्टैटिस्टिक्स. तो ये ऐसे आप बात करोगे आर्गुमेंट में तो जीटीओ वहीं पे सेलेक्ट कर देगा. फिर टास्क में जो मर्जी करना, वहीं सिलेक्शन है आपका. ऐसे बात करोगे लेक्चरेट में, ऐसे आईओ के आगे पेश आओगे, अच्छा नॉलेज होगा तो वहीं से एकेडमी भेज देंगे आपको. सो दिस इज रिजर्वेशन ऑफ विमेन. नो योर इंग्लिश वर्ड ऑफ द डे. अच्छा होता है, पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत. Yeah, what I wanted to bring was this. Not a good news, sad news here. Yeah. 436 CFPF personnel end life in 3 years. Task force formed. So this is an issue which is grappling the forces. ये तो CFPFs की बात है. 436 of their soldiers have committed suicide in last 3 years. Every year about 150 odd are hanging themselves or shooting themselves to death.
Even in the Army, Navy, and Air Force, the situation is almost same. So why do so many people who have a good job commit suicide? So they have formed a task force. Along with that is also suicide of young people. 33 students, IITians have lost life in last 3 years. Quota, every month or 2 months you hear a suicide of a young boy or a girl in quota. So क्या problem है हमारे को? Why are, and these are young people who take their own lives. So someday maybe I'll make a YouTube video on this. This disturbs me a lot. Young people should enjoy, play games, laugh a lot, run around, take masti, take life as it comes. Why there is so much stress that they have to take their own lives? Chalo. So आया मजा? Second thumbs up बनता है, and please like the session and share the session. अब मैं लूंगा आपके क्वेश्चन. ठीक है, ऊपर से लूं. चलो. Okay, let me take from the beginning. ये तो good morning थे शुरू में. चलो good morning हो गया है. Diksha Chaudhary says, yesterday I watched Elephant Whisperers. Very nice. Whispers. Happy birthday Aussie. Thank you very much. Mathematics पढ़ ले. Sir, I want to join 9 para SF. यार ये ना मैं फिर रोस्ट करूंगा बहुत बुरी तरह आप लोगों को. बहुत बुरी तरह रोस्ट करूंगा. If I come to my own. ये कहां से तुम्हारे दिमाग में आता है कि मैंने 9 para SF जाना है, 1 para SF, 2 para? पहले एकेडमी तो आ जाओ. ना रिटर्न पास, ना SSB पास, प्लानिंग 9 para SF, 1 para SF. और मैंने क्यों करते हो ऐसे? क्यों बोलते हो बातें? Why do you talk like this? And this I see lot of you रील देख के, और कुछ नहीं. तुम्हें कोई आइडिया नहीं है 9 para SF क्या करती है. बस वो कुछ है, उनकी वीडियो देख लो बस, एंड सिंगोइस्टिक एंड रेटोरिक, और बस जी मैं तो. प्लीज स्टॉप दिस. आई कीप टेलिंग यंग पीपल, प्लीज स्टॉप दिस. फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर रिटर्न एग्जाम. पहले वो क्लियर करो, साथ के साथ SSB के लिए जाओ, उसके लिए पर्सनैलिटी बनाओ, कम्युनिकेशन, ये सब करना पड़ेगा. 9 para SF तब मिलेगी. फिर एकेडमी पहुंचो, वहां टफ बनो, वहां पास आउट गुड इन मेरिट एंड शो टू योर DS की सर यू आर टफेस्ट गाई. फिर वही में रिकमेंड. अदरवाइज कहेगा तेरे से भागा जाता नहीं, तो बात करता 9 para SF की. यू विल गो टू ASC और AOC और AME. सो ये बातें मत किया करो. ठीक है. ECI full form, Election Commission of India. ECI. अच्छा, it's available on. Elephant's name was Raghu and Anu. Yeah, Raghu is the male boy and Anu was a female. Yeah. Thanks, Diksha. Please, Raj Burande, please make a video explaining geography of J&K and strategic control points. सारा काम मेरे से कराओगे आप लोग हैं? ये मुश्किल है. मैं क्या करूं? Hemant Kumar, sir, do we still need governor in India as a colonial practice? And we have also. I feel so. There is a question mark on the performance of governors. Certainly there is a question mark, especially wherever they are in opposition ruled states. उनका काम है opposition ruled states के अंदर government को चाबी देके लगाओ. We saw it in West Bengal, dirty politics in West Bengal. Then we've seen it in governments being sacked. So, and this is not something today. It was happening in 80s also. 80s में भी हुआ है. सो मैं तो इंडियन पॉलिटिक्स को तब से देख रहा हूं. Aman Singh, yeah, this issue can be discussed in a debate or a discussion, but life, right to liberty, right to life is there with everyone. ठीक है. Microplastics in our blood also. ओके, नॉलेज मैनिया 2020 क्या ऐड बनाई हुई है, मतलब सॉरी आईडी बनाई हुई है. चाइना इज ट्राइंग टू मेक जियोपॉलिटिक ग्रुप लाइक USA एंड NATO कंट्रीज. ओके, लेट्स सी. रशिया वांट्स टू यूज न्यूक्स ऑन यूक्रेनियन बैटलफील्ड. दिस इज बिकॉज रशिया इज एग्रेसिव कंट्री दैट डज नॉट हेजिटेट टू यूज न्यूक्स इवन इफ इट मींस. हु हैज टोल्ड यू दिस? ये कहां से लेके आते हो आप? ये TV9 भारतवर्ष देख रहे हो क्या? वो करते हैं, वो हमेशा उनके हर शो में होता है न्यूक्लियर लड़ाई शुरू होने वाली है, तीसरा विश्व युद्ध. वो करते हैं ऐसे बात. वाई शुड रशिया यूज न्यूक्लियर वेपन्स इन यूक्रेन? इट्स ओन नेबरहुड, इट्स ओन पीपल विल डाई. कौन तुम्हारे दिमाग में डालता है रशिया वांट्स टू यूज न्यूक्लियर वेपन? नो, नॉट एट ऑल. दे डू सेबर रैटलिंग. डराने के लिए करते हैं. ठीक है. नोबडी विल यूज
100 kilometers across its territory a nuclear bomb, territory which you want to capture, फिर रह लोगे तुम वहां? फिर रह सकते हो वहां पे कि जी मैंने बॉम्ब फोड़े 5 न्यूक्लियर बॉम्ब, अब मेरे पास आ जाओ? सो प्लीज ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो. Yes, you are right. So this is, Aman, you're right. This is problem with all our governments of use of these agencies. Sir, is there any need of governor if people represent? Yeah, I agree with you. India is a country where no money, nothing can be bought, even single digit numbers, and just money based. Yes, I agree with you. Okay, nukes are to threaten. They are weapons of deterrent. They are weapons of peace and not of war. ये नोट कर लो. Nuclear weapons. मेरी पूरी PhD है इसके ऊपर. My PhD is on nuclear deterrence. Adarsh Pratap Pundir, why India is not working on reverse engineering as like other nations like China and also Russia now on the way to reverse with the help of Iran? We do. आप क्या सोचते हैं हमारी इंडस्ट्री वाले करते नहीं है रिवर्स इंजीनियरिंग? करते हैं. Many years back I went to a Tata factory when I was still serving, where they were making a new car. ठीक है. So there was a place where they had a practice track and this. So a lot of cars were there which had full sticker. कुछ भी, no color, only the front window pane was, and you could make out कि windows है. Everything was. So हमने पूछा off the record कि ये क्या है? कहता whenever a good car is launched, we buy it and ship it to India here. Then we rip it open, and then we see what we can do. So this is going on, I'm sure. Prince Pratap, sir, I'm going to join Indian Air Force as Agniveer. जाओ, आपकी मर्जी है, please go. Yeah, you are right. Wherever women have become sarpanch, they're only for signature. In fact, they don't even go for meeting. The husband goes. और हरियाणा में जो कभी तू कौन है कहता मैं सरपंच का हस्बैंड हूं. So sad, but चलो कोई बात नहीं. YMA rocks. Priya Patel, Ram Ram. Moor Saab, Ram Ram. Priya Patel, Ram Ram. Shriman, Ram Ram. Yeah, you can read Tribune. मैंने यहाँ आता नहीं है तो मैं ट्रिब्यून नहीं पढ़ता हूँ. सर इज न्यूक्लियर वेपन विल, यार तुम इंग्लिश ठीक करो. XYZ कल स्टार्ट हो गया कोर्स हमारा BOCC, बट वी मे लॉन्च मतलब 4th बैच. सो 1-2 दिन और हैं. अगर अभी भी with this English is very difficult. I'm being very frank with you, but you can improve because you have the वो है लिखने का. No, Yashu Chahar SSB, there is no quota. No quota at all in SSB. Only for women. Women, not martyrs, killed in action is the right word. जो killed in action हैं उनके husband, उनके लिए there is a quota. Only for them. वो चाहे जवान की वाइफ हो चाहे ऑफिसर की वाइफ हो, उनके लिए कोटा है. For sons, daughters, no quota, no relation, nothing. आकिब, सर माई NDA 3rd अटेम्प्ट में अनअकैडमी ने फुल मॉक दिया था. गॉड आते हैं बट दूसरे प्लेटफॉर्म 200 आते हैं, क्या करूं सर? पहले इंग्लिश. आकिब, प्लीज इंप्रूव योर इंग्लिश. इवन इफ यू क्लियर द रिटन एग्जाम, नो यूज. Kali Prasad Nasab, I passed AC exam. Suggest me for upcoming interview preparation. Kali Prasad, you join the BOAC course immediately. In fact, join the BOCC now so that आपकी इंग्लिश और कॉन्फिडेंस इंप्रूव जाए. बहुत ACC के बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे पास, बहुत पढ़ रहे हैं, और PCSL के पढ़ रहे हैं. So don't waste this opportunity. Next BOAC will be, we will launch a crash course 20-22 तारीख के आसपास, 7-day course for BOAC. The regular course will start in April. What do you think about dirty nukes? It's used, but I don't think any government, even Pakistan, they have got total control on nuclear weapons. I have full faith in their SPD, Special Plans Division, which controls nuclear weapons. So dirty nukes means it is in hand of terrorists. So why there is no reservation? Armed forces, thank God there is no reservation. Thank God there is no reservation. There is no reservation armed forces. But willy-nilly जवानों का हो जाता है, because caste based units है. कास्ट बेस्ड यूनिट्स हैं तो वहां उसी कास्ट के बंदे जा सकते हैं.
लेफ्टिनेंट शिवम, अभी से लेफ्टिनेंट, थैंक यू वेरी मच। आप क्यों आए हो क्लास में, ऑलरेडी लेफ्टिनेंट हो। सर मेरी एसएसबी 21 मार्च को है सर, बहुत डर लग रहा है, आई एम फ्रेशर। भाई तुम्हारा तो विद दिस इंग्लिश तो होना नहीं, आपको फ्रेशर की स्पेलिंग नहीं पता, आप लिख नहीं सकते, ऊपर से आपने लेफ्टिनेंट लगा लिया नाम के आगे, फिर रोस्टिंग होगी। सो विद दिस इज वेरी डिफिकल्ट, आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक विद यू विद दिस इंग्लिश, ठीक है। अश्वनी राय, सर हम भी हैं, ओके। पीओएसी टाइम पीरियड, पीओएसी नहीं बीओएसी, बीओएसी इज अ 3 वीक्स कोर्स। या बीओ मैक्सिमम अटेंड थ्रू मोबाइल फोन होम। हमारा तो शहबाज सिंह ने मोबाइल फोन से पूरा कोर्स किया बीओसीसी, अभी एनडीए में थर्ड टर्म में। Prince Pratap, sir, I'm conferenced out 3 times now. We will let you know your mistakes when you join the BOAC. Pratap, because there you will go through a proper counseling with the psychologist, mock interview with GTO. You will be able to identify where you have been going wrong. PPDT, I am bringing a top psychologist on 26th for a full mega seminar with him. ऑलरेडी मैंने बात की, उनसे पूछना है सवाल आके पीपीडीटी का। या बीओएससी इज ऑनलाइन। कालिका प्रसाद, कलिप प्रसाद नायक, ऑल माय कोर्सेज आर ऑनलाइन, देयर इज नो ऑफलाइन, ऑनलाइन। सनातनी देशभक्त कट्टर, फुल्ली इग्नोर्ड। तुमने अभी तक आईडी नहीं चेंज की, तुम बोल रहे सर कर रहा हूं आईडी चेंज। आईडी चेंज करो, आईडी चेंज करो। ओके, सो मजा आया। I really enjoyed this session, answering your questions. And once again, I'll share the Telegram link. Telegram link पे आप आ जाओ and then join the more community, very, very interactive community. And still somebody has any doubt, communication course join करना है तो अभी 1-2 दिन है, सोच लो, पेरेंट्स से बात कर लो। I brought down the price drastically and अमेजिंग रिस्पॉन्स, बट आई विल स्टिल ट्राई एंड एडजस्ट। ना नहीं कहूंगा किसी को, बिकॉज ये आपके कैरियर का मतलब है, कैरियर का मतलब है, ठीक है। एंड एसएसबी के लिए बीओएसी इज अ टेरिफिक कोर्स, द बेस्ट पॉसिबल अंडर दीज सर्कमस्टांसेस, एंड दिस इज मोर देन इनफ फॉर एसएसबी। यस नितिन, मोर देन इनफ। अरे हम और जीटीओ भी ऑनलाइन करा देंगे। हमारी जीटीओ मैडम को से तुम बात करोगे ना, 5-6 सेशन लेती हैं, एक एक चीज, शी विल एक्सप्लेन ईच ऑब्जेक्ट टू यू। इतना ही चाहिए दिमाग में, आइडिया ही लेना है। कोई हमने वहां गेती बेलचा थोड़ी उठाना है। पहले बिना कोचिंग के तो हम लोग तो बिना कोचिंग के सेलेक्ट हो जाते थे। कट्टर भी हटाओ, सब हटाओ, अब नाम लिखो अपना, ठीक है। कट्टर मत बनो अगर ऑफिसर बनना है तो, ये कट्टर पट्टर से ऑफिसर नहीं बन सकते। अपना नाम लिखो, प्लीज राइट योर नेम, बी सीरियस अबाउट लाइफ, ठीक है। ये आईडी बना के आप क्या प्रूव करना चाहते हो, आई लीव इट टू यू। कोर्स कहां से ज्वाइन करें, टेलीग्राम पे मैसेज दे दो, मैं भी टेलीग्राम का लिंक शेयर कर रहा हूं, उस पर मैसेज दे दो एंड यू कैन ज्वाइन द कोर्स, ठीक है। ये मैं मैसेज डाल रहा हूं आप लोगों को, ये बहुत हैपनिंग टेलीग्राम का सबसे बड़ा चैनल है ये। सो यू कैन ज्वाइन दिस एंड देन सेंड अ मैसेज। प्लस हर वीडियो में 2 नंबर दिए हुए, हर वीडियो में 2 नंबर दिए हुए, प्लीज सेंड अ मैसेज और कॉल दोज 2 नंबर्स। कोर्स ग्रुप डिस्कशन इज the debate is only for YMA। डिबेट देखो, आई हैव टू टेक केयर ऑफ YMA स्टूडेंट्स। YMA जिसने BOAC किया है, BOCC किया है, साहस बूट कैंप किया, ये तीनों कैटेगरी के बच्चे, वो सारे, उनको पहले आई वांट टू गिव देम चांस। और पूरी डिबेट बच्चे ही ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑनलाइन। सो आई फॉर्म्ड अ कमिटी एंड जिन्होंने एक बार हिस्सा ले लिया, नेक्स्ट टाइम दे कैन कम इन ऑर्गेनाइजिंग टीम, बट दे कांट टेक पार्ट, ठीक है। पार्टिसिपेशन एक बार कर सकते हो। सो टू गिव चांस टू मोर एंड मोर, विद मोर इट इज मोर एंड मोर। डोंट जज, डोंट जनरलाइज, यस, नो रिजिडिटी, यस। लेफ्टिनेंट शिवम, मतलब मेरा एसएसबी, भाई इस इंग्लिश के साथ कैसे होगा बच्चे? गिव टाइम टू योरसेल्फ, यू हैव टू, मतलब एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू, हो जाए। मैं तो, आई एम, माय बेस्ट विशेस विल बी विद यू, माय बेस्ट विशेस विल, बट आई एम वेरी फ्रैंक, ठीक है। हाँ, मेरी यूएसपी है, मैं मुंह पे बोल देता हूँ बच्चों को, बिकॉज आई वांट टू शो यू मिरर, आई एम अ ट्रू मेंटोर, ठीक है।
थैंक यू आशीष मेलावत, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो वंस अगेन बहुत मजा आया मुझे आज का इस सेशन लेके एंड टू कवर दिस काइंड ऑफ न्यूज। सो गुड लक टू यू, एंजॉय योरसेल्फ, थोड़ा खुश रहो यार, थोड़ा खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, भागना दौड़ना खेलना कूदना, लाफ ऑन योरसेल्फ एंड कीप योर माइंड ओपन एंड कीप योर आईज ओपन, कीप योर आईज ओपन, दुनिया देश में क्या हो रहा है, ठीक है। लिखना शुरू करो, डायरी लिखो, अपनी लाइफ स्टोरी लिखो, प्लीज बी डिलीजेंट, डिलीजेंट इज द वर्ड, मेहनत करो, मेहनत करो और प्ले हार्ड वर्क हार्ड। बीच में मत रहो कि रील देख रहे हो, किसी की वीडियो देख देख के इंप्रेस हो गए, मैंने 9 पैरा जाना है, मैंने फलाना जाना है। पहले यार पहला स्टेप तो लो, पहला स्टेप ये, ठीक है। चलो या पटना, पटना पटना इज ऑन 18th, 19th को सेमिनार है, 19th को सेमिनार है, हॉल बुक किया हुआ है हमने वहां पे, 18th को मैं पहुंच रहा हूँ। सो आई मीट यू ऑन 18th ऑल्सो। जो मेरे YMA के बच्चे हैं उनको मैं एड्रेस दूंगा, आना, गपशप मारेंगे खूब, पटना घूमेंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे, पटना घूमेंगे, सुबह गुरुद्वारा जाएंगे, सुबह सुबह गुरुद्वारा जाएंगे, वहां प्रसाद छकेंगे, वहां भी मीटिंग करेंगे गुरुद्वारे के पास, पूरा वॉक कराऊंगा आपको। पिछली बार भी मैं बच्चों के साथ पूरा वॉक किया था मैंने, गुरु गोविंद सिंह की बर्थ प्लेस है एंड फॉर मी ही इज अ ग्रेट लीडर, ग्रेट सेंट सोल्जर, तो वहां जरूर जाएंगे एंड ठीक है। नो ऑफलाइन कोर्स, प्लीज डोंट वेस्ट मनी, डोंट वेस्ट मनी, कम ऑन। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, टेक केयर, गुड बाय।